this. Is there any difficulty in picture or as well in voice quality? Please let me know. Okay, so yesterday we have started with the topic. Already we have recapped the topic, basic analytical techniques in chemistry. We know very well, even in our daily routine life, we are using different types of analytical techniques, and even in chemistry, we need different techniques for the analysis of the substances or different analytical methods, even principles. So the principles of basic analytical techniques we have discussed in last chapter, that is second chapter. In third chapter, we are discussing the basic analytical techniques. Yesterday, we have revised or we have recapped the chapter, and we have seen that the filtration is the most common method which is used in as an analytical technique. Second thing, also we have used a crystallization process, fractional crystallization process. And next is nothing but the distillation and fractional distillation. So yesterday we have recapped most of the topic, and just the topic remaining is nothing but the fractional distillation. So we'll cover the fractional distillation and we'll go ahead next topic. So what we have to discuss here in this chapter. So already we know what is distillation. Distillation is the process in which is used for the purification of liquids, or you can say separation of the liquids. So in this process, in distillation process, liquid is converted into its vapors by heating. It may be a direct heating or it may be indirect heating. In case of most of the organic compounds, we use indirect heating process, where the substance will be heated with the oil or oil bath or water bath. And because organic substances can has the possibility that they can break down or decompose because of the heating, direct heating. So that's why indirect heating is used. So in distillation process, a liquid is converted into its vapor at its boiling point, and the vapors are condensed, cool down, and then pure liquid is obtained. Whereas whatever the impurities in that liquid, that impurities remain in the surround bottom class because its boiling point is higher. So distillation process is used when the boiling point of impurities is higher than the boiling point of liquid. That is also one of the important aspects of this one. Then we have seen yesterday that's called a fractional distillation. So let's see what is this fractional distillation. When we talk about the fractional distillation, see, number one is distillation. Okay, number one is distillation, and next is fractional distillation. Fractional distillation. So this is the first thing, and this is the second. Now, when we use a fractional distillation, इसके अंदर कुछ important points आते हैं. Number one, there should be a mixture of two or more components. We can have two or more, 4 or 5 components, which we can separate it out. So there should be mixture. And when we use a fractional distillation, at that time, the difference of boiling point should be low. So low difference in boiling point. दोनों substance के boiling point में बहुत कम difference होना जरूरी है. That is, we can say difference is of low, especially for the boiling point of substances. Clear? Now see, we can have the mixture of methyl alcohol and benzene. So suppose, for example, we have methyl alcohol. So this is CH3COH and benzene C6H6. These are the two substances what we can have. Or if we have the mixture of methyl alcohol and benzene, we can separate out them. Benzene has 353, which is a boiling point of benzene, what we can say over here. And when we have the methyl alcohol, that is 337, is the boiling point. Kelvin, it is in Kelvin. So Kelvin is the boiling point of these substances. This is for example. We can have any of the substances, we can have more of the substances. Now, when we compare methyl alcohol and benzene, 337 point something. So that is what we can say. Now, the boiling point difference is almost of 20. So, अगर हम देखेंगे तो ये moderate है, मतलब काफी ज़्यादा difference नहीं है, काफी कम भी नहीं है. So, इसके लिए हम लोग fractional distillation use करेंगे तो काफी अच्छी तरीके से हम लोग separate out कर सकते हैं. What will be done here in this process? We have here round bottom class, as we have seen yesterday. So this is the round bottom class, okay, and it is kept on the tripod stand. Over here, and here is the funnel.
here is the funnel, and it is heated. And here is the liquid taken, that is mixture is taken here. Whatever the mixture is taken here. And here is the stand. So यहाँ पे हम लोग stand attach करते हैं, stand को यहाँ clamp करते हैं. And यहाँ पे condenser और इसके बीच में एक fractionating column होता है. So here is the fractionating column. So this is the fractionating column. अब fractionating column बहुत अलग-अलग type के हैं, आपको अलग-अलग type के fractionating column मिलेंगे. So you can have this different types of fractionating column यहाँ पे मिल जाते हैं. And this fractionating column has a close over here and it has the outlet here, through which that enters into the condenser. ये condenser में चला जाता है. So as we have seen yesterday, the condenser, and then it is collected here in another container. ये यहाँ पे container में किया जाता है. चाहे इसे भी stand के साथ हम लोग put कर सकते हैं यहाँ. So this is what we can say. So I have drawn the rough diagram. Okay, rough diagram मैंने यहाँ पे draw किया हुआ है. So अब देखिएगा. When we say this is the fractional distillation, it is based on the difference in boiling point. And when we say distillation, the difference in boiling point should be very, very low. If the difference is very close, then it's difficult to separate out them. And that's why we need to use this fractionating column. This has to be attached to the standard. Okay, now, excuse me. Okay, sorry. This is a fractionating column. Now, the thing is that why we have used this fractionating column. Here we have the mixture of methyl alcohol and benzene, and the boiling point is here. So we can say the boiling point of methyl alcohol is 337, and the boiling point of benzene is 353 Kelvin. So absolutely we can say this is the low boiling point, and this is the higher boiling point. So if we are taking the mixture of this one here in this non-bottom flask, some porcelain pieces are added to avoid bumping, and then it is heated. Now this is actually direct heating, which has to be avoided, has to be taken into the oil bath. Suppose many have your oil bath block here. So this is oil bath structure. So your oil bath. So this is oil bath. So oil bath के कारण direct heating avoid होता है और substance breakdown नहीं होता है. When it is heated, at that time what happens here? This is the substance which got heated, and here thermometer is added. No doubt at all. Thermometer यहाँ पे add किया जाता है. Thermometer. So when it is heated, at the moment the boiling point reaches up to 337 Kelvin, then this methyl alcohol starts vaporizing. Methyl alcohol starts vaporizing. Benzene, its boiling point is higher, so it's do not vaporize over here. So methyl alcohol is vaporized. It may happen that some molecules of benzene may vaporize because of heat. So the vapors travels over here through this fractionating column. There are different types of fractionating column. You can go through the pictures given in the textbook. You can search it online. There are many different types of fractionating column. Which column has to be used depend upon the difference in boiling point of the two or more substances. If difference is too close, then very long and different types of fractionating column is used. If difference is too big, then small or no need to use the fractionating column. So when this substance is heated, at that time methyl alcohol is the substance which is at low boiling point. This methyl alcohol vaporizes. Vapors travel through this fractionating column. During this traveling, if some of the vapors of benzene are already vaporized or already arised, they cool down during this travel because the temperature falls down, and that's why benzene being having higher boiling point that condenses and again comes down to the bottom, round bottom flask. Whereas the vapors of methyl alcohol passes here into this condenser. They passes here into the condenser, and this is the thermometer which will show the temperature equal to 330 degrees Celsius. Okay, tell me. Vapors comes into the condenser. Here is the water condenser. Whatever the suitable condenser is used, then it is condensed. Vapors are condensed and this collected here into the another container. मैंने यहाँ पे rough diagram draw किया because already a topic हमारा हो चुका था. That's why I'm revising the topic. So मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब understand कर रहे हैं. So we can draw a good diagrams or well diagrams. Okay. So now this thing in this way we can say this substance is collected here, and till this total methyl alcohol is vaporized, this temperature, this thermometer shows a constant reading of the temperature. The moment all methyl alcohol is vaporized, then temperature start rising because the vapors of benzene will come arise over here. The moment this thermometer shows the higher reading than this one, immediately remove this container, put another container, and collect the second substance, that is benzene, into another second container. Till all the benzene is removed, the taste thermometer shows the temperature 353 Kelvin around. And the moment all benzene is removed, then again it starts rising, temperature start rising. That means all the benzene is removed. Remove this container, and these are nothing but the impurities. What remains behind is nothing but the impurities. So hope everyone got this.
So what we are seeing over here. So this is the way how we can separate out. That is substances. We can say the mixture of substances having a small difference in their boiling points. Small difference in their boiling point. That is what is a fractional distillation. Hope everyone got this. What is the fractional distillation? What we have seen here. So distillation and fractional distillation both are almost similar. In both of the process, we convert liquid into its vapors. Vapors are condensed and the pure substance is obtained. The thing is that when to use distillation and when to use fractional distillation, this choice depends upon what we have to purify and what is the mixture, what we have to purify, what is that boiling point. That depends upon the difference in boiling point. So if the difference in boiling point is large, we can use the simple distillation process to again for that. Or if the difference in boiling point is low, we go to the fractional distillation, or we can use a different fractionating columns. We can have the pictures here in the textbook as well as you can search it online and we'll get different fractionating columns. So that is what we can see here, fractional distillation process. मुझे लगता है लास्ट के लेक्चर में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था. Now we have to go ahead for the solvent extraction process. So we have covered filtration process, we have covered crystallization, we have covered fractional crystallization, we have covered distillation, and we have covered fractional distillation process. Now, with the process and with the principle, we need to remember or recall one of the best examples. जैसे कि आपने example दिया है, methyl alcohol and benzene का example दिया है. So उसी तरीके से when distillation we have, उसके लिए भी एक example होना जरूरी है. With the boiling point has to be learned by you. ये boiling point हमें लिखने पड़ेंगे. हम इसके example लिख के नहीं चलेगा कि methyl alcohol and benzene. We have to write the boiling point too again. ये भी उसके अंदर जरूरी है. So in that case or in this way we can go ahead for this one. So crystallization के लिए भी हमें दो substances और उनका solubility और खास करके उनके दो example हमारे लिए जरूरी है. We have that examples. Clear with this? So that is what we can say here. Let's move to the next topic. जो हमें discuss करना है, that is solvent extraction process. Hope everyone got it. There isn't any difficulty doubt to anyone in this topic. Okay. Is there any difficulty doubt to anyone? Okay. So next method is called as solvent extraction method. So this is, you can say, fourth technique. Solvent extraction. Solvent extraction method. Okay. Solvent extraction method. Now see, what is here in the solvent extraction process? That is what we'll discuss here. Solvent extraction. When we have to separate an organic substance, and this substance is having a different solubility, or you can say substance is more soluble in A substance and less soluble in B substance. So when we compare two of the solvents or two of the solvents and one of the organic compounds, which has difference in solubility. So in one substance it has different solubility, in another substance it has different solubility. And if we have this type of scenario, then we use this solvent extraction method. Okay. So देखिए अभी इसके अंदर हम किस तरीके से substance को separate out कर सकते हैं. We have the diagram over here. So this is a funnel-like structure. Okay. This is what we can say, funnel-like structure. Now, yeah, we'll take the organic substance which is present in aqueous solution, that is in water. So suppose this is the layer of, you can say, aqueous substance. But here, organic substance. Here, organic substance plus aqueous. But there is aqueous organic substance, there is water. Aqueous means water. So we can say we have one of the organic substance which is soluble in water. So this is the solution of organic substance, water. That is aqueous solution we can have. And now we have to separate out this organic substance from water, that is from aqueous substances. Now what we'll do? Then what, this is called a solvent extraction method. What we'll do here, we'll take another organic solvent. We'll take another organic solvent in which this organic substance is more soluble than the water. Now, substance is single. Suppose we have A substance. हमारे पास A substance है. Now,
ए सब्सटेंस की बात करते हैं तो ए सब्सटेंस दो चीजों में हो सकता है, दैट इज यू कैन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ये होता है वाटर हम उसकी बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज द सब्सटेंस ए व्हिच इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज वेल एंड इन वाटर, दोनों में भी वो सोल्यूबल है। सवाल ये होता है कि वो किसके अंदर ज्यादा सोल्यूबल। सो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल तो है जरूर और इसके अंदर भी सोल्यूबल है, बट किसके अंदर वो ज्यादा सोल्यूबल है, दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस हियर, किसके अंदर वो ज्यादा सोल्यूबल। सो दिस इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन व्हिच इट इज मोर सोल्यूबल देन द वाटर। कंपेयर करने की बात आती है तो दिस सब्सटेंस इज मोर सोल्यूबल हियर इन दिस वन। हाँ, यस यस। So sorry. So a substance is soluble in organic solvent as well as in water. इसके अंदर वो soluble है, and this substance is more soluble in organic solvent than the water if we compare them. So organic substance is soluble in water as well as in organic solvent, but it is more soluble in organic solvent. So what we have done, we have taken, this is the aqueous solution of this organic substance. We have taken an aqueous solution in which this substance is already dissolved. We'll use some another organic solvent and we'll take it here. So this is here. ये अभी मैं ऐसा करता हूँ, अभी सेपरेट आउट करने के लिए this is, क्योंकि दोनों तरफ लेयर निकालना है हम लोगों को। So see, this is organic solvent and this is aqueous and ये उनके अंदर का separation। Now this organic solvent जो हमने अभी लिया है, that is immiscible with water. That must be immiscible with water. Now what happens here? When we have added it and we have shaken it well, we have to shake it well. So when we shake it well, at that time what happens? We learn again. When we shake it well, at that time the organic substance already dissolved or already soluble here in water, when comes in contact with this organic solvent, this substance is more soluble here in this organic solvent. Already we have seen that. So that's why the organic substance which was present in this water enters into this organic solvent. So when we shake it well and keep it for a long time or some time, we found that total substance which was present here in this water enters into this one, and now this is remains only water. So now this consists organic solvent plus organic substance. So this layer, first layer consists of organic solvent plus organic substance, and this consists of only water. शुरुआत में सिचुएशन क्या था? शुरुआत में हमने जो वाटर लिया था उसी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, उसका सॉल्यूशन था जिसे हम लोग एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। फिर उसके साथ हमने ये सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया जिसके अंदर ये सब्सटेंस मिक्सिबल है, जिसके अंदर वो सब्सटेंस इजीली सॉल्युबल है। नाउ व्हेन वी टेक इट वेल, when we mixed it well, at that time the substance, organic substance जो इसके अंदर प्रेजेंट था, ये वाटर से ज्यादा इसके अंदर सॉल्युबल है, तो वो इसके अंदर एंटर करता है। और फिर हम जब सेक करने के बाद कुछ समय के लिए रखते हैं तो बाद में सिनेरियो ये होता है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस इधर चला जाता है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है और यहाँ पे सिर्फ वाटर बनता है। दोनों लेयर को सेपरेट आउट करेंगे, तो हमें पहला लेयर जो मिलेगा दैट इज यू कैन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा, और दूसरा जो नीचे का लेयर मिलेगा दैट इज ओनली वाटर, ये हम लोग को मिलता है ना। एक बार हम लोग ये मिल जाता है, इसे कैसे सेपरेट करना है ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। ये असल है, अगर दोनों लिक्विड है तो हम लोग डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं, और अगर दोनों मतलब अभी यहाँ पे हम लोग लिक्विड यूज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दोनों को हम लोग डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन सेपरेट आउट देम, दैट्स कॉल्ड द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। You have this? Also, everyone got it? What is solvent extraction method? Solvent extraction method is used for the separation of organic substance from its aqueous layer, from its aqueous substance or aqueous solution, by using a suitable solvent in which it is more soluble. So this is what we use, and this is what we have that. That is called, you can say, solvent extraction method. पहला मेथड था हमारा फिल्ट्रेशन, दूसरा मेथड है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का सब टाइप है फ्रैक्शन, फिर डिस्टिलेशन के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और अभी जो देखा हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये कब यूज करना है और किसके लिए यूज करना है इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। When the organic substance is dissolved into the aqueous solution, that is aqueous solution of organic substance is there, we have to separate out organic substance from the aqueous layer, then we use this method, solvent extraction method, in which suitable organic solvent is taken. इसके अंदर दो चीजें, suitable organic solvent in which organic substance is more soluble than the water, and number two, this organic solvent must be immiscible with water. So ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। Once again मैं रिपीट कर रहा हूँ, this choice of organic solvent should be in a such a way that organic substance must be
more soluble in this organic solvent than this water. Number one. Organic solvent and water should be immiscible. हमारे घर के अंदर का एग्जांपल हम लोग है जानते हैं अच्छी तरह. अगर हम लोग बात करते हैं हमारे घर के अंदर ऑयल और वाटर की बात करते हैं, हम जानते हैं ऑयल वाटर आर immiscible, है ना. immiscible होते हैं क्योंकि ऑयल ऐसा रहेगा और वाटर यहाँ पे जाएगा. सो दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं. ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं. सो इन दैट सेंस वी कैन से यार ये इस तरीके से मिल जाता है. दैट्स कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड. होप एवरीवन गॉट दिस. व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड? And now let's move to the next. That is called your last technique called your chromatography technique. So there isn't any difficulty and doubt to anyone. Or if you have, please let me know through the text or through unmuting your voice. Okay. Okay. Now next is chromatography technique. Okay, this is the last technique what we have discussed here in the chapter. उसके साथ ये chapter ही खत्म हो गया. But chromatography technique के अंदर दो तीन आते हैं. That is, you can say adsorption chromatography, paper chromatography, and you can have here thin layer chromatography, or you can say capillary light chromatography. There are many types of this chromatography, but the basic technique or basic principle is the similar. What we have to discuss is chromatographic technique. Okay. अभी देखिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के अंदर दो चीजें होती हैं. नंबर वन होता है you can say stationary phase, and number two is you can say moving phase. Okay, so every chromatography, there are different types of chromatography, but every chromatography has these two techniques, two things. Number one is nothing but the stationary phase, and number two is nothing but the moving phase. And chromatographic technique is based on, मतलब इसका principle देखिए, is very important. What is the principle? What is the principle? So this is based on difference in absorption or difference in absorption. Okay, so that is what we can say. Chromatographic technique we are talking about. And this chromatographic technique consists of stationary phase and moving phase. What is stationary phase? What is moving phase? I will clear with the example. But the principle here in this chromatographic technique is based on difference in adsorption. अब देखिए हर इसमें एक प्रिंसिपल होता है. जैसे मैंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर प्रिंसिपल बताया मैंने. ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज मोर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन द वाटर. ये प्रिंसिपल है. देन डिस्टिलेशन के अंदर मैंने ये बताया, और खास करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर ये बताया मैंने कि सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू वेपर्स एंड वेपर्स आर कंडेंस्ड टू कूल डाउन. क्रिस्टलाइजेशन के अंदर ये बताया मैंने कि क्रिस्टलाइजेशन के अंदर दैट प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सोल्युबिलिटीज. सोल्युबिलिटी की डिफरेंस होती है उसके अंदर, वो उसका मेन प्रिंसिपल है. उसी तरीके से क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन एडसॉर्प्शन. अभी देखिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. आउट ऑफ दैट वन इज एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. पहला जो है वो है एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. ओके, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. अब देखिए ये एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वो हमारे घर तक आ चुकी है. मतलब हमें से हर एक जानता है, हमारे हर ये एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मिलती है. शायद वो दिखाई नहीं दे रहा, शायद ऊपर लिखा है थोड़ा सा. फर्स्ट एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. अभी देखिए मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, प्रिंसिपल बताता हूँ, फिर हमारे घर के अंदर वो किस तरह से आता है वो मैं बताता हूँ. सी दिस इज द ब्यूरेट. मतलब हम जब लैबोरेटरी में करते हैं, दिस इज द ब्यूरेट लाइक स्ट्रक्चर, बिकॉज़ दिस एक्सपेरिमेंट हम लोग लैबोरेटरी में कर सकते हैं. दिस ब्यूरेट लाइक स्ट्रक्चर, नो डाउट. दिस ब्यूरेट इज क्लैम्प्ड विद अ स्टैंड. इस स्टैंड के साथ उसे क्लैम्प किया गया है. ब्यूरेट है. आपने जो लैब में देखा है ब्यूरेट, वो ब्यूरेट यहाँ पे है. और इसके अंदर या तो चारकोल, अगर अगर या फिर सिलिका जेल का ये यूज किया जाता है, लीड यूज किया जाता है. सपोज इसके अंदर हमने ये जो है दिस विल कैन से चारकोल ऐड किया है. चारकोल में इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में हम जानते हैं चारकोल हमारे घर के अंदर जब यूज करते हैं कई सारे इसमें आ जाता है. चारकोल. अब देखिए
here is the container. This container has a mixture. This container has a mixture of different substances. तो इसके अंदर substance A है, substance मतलब here you can have substance A, B, C, D, E ऐसे अलग-अलग substances इसके अंदर present. अगर हम मेटल की बात करते हैं तो जिंक प्लस आयंस, निकल प्लस आयंस, कॉपर प्लस आयंस, सोडियम प्लस आयंस, देयर आर डिफरेंट आयंस प्रेजेंट हियर इन दिस मिक्सचर एंड दिस इज अ लिक्विड मिक्सचर, नो डाउट एट ऑल. ये इसके अंदर प्रेजेंट है. सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस व्हाट वी आर हियर एंड वी हैव टू सेपरेट आउट द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस. इसके अंदर जो मिक्सचर है वी हैव टू सेपरेट आउट दैट. हमें उन्हें सेपरेट आउट करना. नाउ किस तरीके से हम उसे सेपरेट आउट करते हैं, दैट इज व्हाट वी डिस्कस हियर. दीस आर सेपरेटेड बाय यूजिंग क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन एडसॉर्प्शन. What the procedure we have followed? We have taken this burette and it is filled with either, this choice of this substance depends upon this polymer, you can see stationary phase. ये जो substance इसके अंदर भरा हुआ है, this is polymer stationary phase. और इसके ऊपर जो put करेंगे, that is polymer moving phase. वो हम देख रहे हैं. Now this is the polymer stationary phase, and the choice of stationary phase depends upon the substance what we have purified, what we have to separate out. There may be a agar-agar solution, there may be a silica gel, there may be artificial resins, there may be a charcoal beds. There are different substances of we can use. Suppose हमने यहाँ पे charcoal put किया हुआ है. Now ये सारा charcoal है, मतलब हमारे घर के अंदर पानी का purification हम उस तरीके से कर सकते हैं. ये charcoal के beds है, charcoal है. Okay. Now this is the mixture which is taken here. This mixture is poured over this charcoal. ये mixture इसके ऊपर poured किया गया. उसके अंदर डाल दिया यहाँ पे mixture पूरा. जैसे हम मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर सब्सटेंस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, देयर आर डिफरेंट सब्सटेंसेस. और फिर इसके अंदर एक दूसरा यूलुएंट हम पुट करेंगे, दैट इज यूलुएंट व्हिच इज कॉल्ड एज मूविंग फेज एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज. ये जो है बेड्स ऑफ चारकोल या फिर बेड्स ऑफ सिलिका जेल, बेड्स ऑफ आर्टिफिशियल रेजिन्स आर कॉल्ड एज, यू कैन से हियर, स्टेशनरी फेज. एंड ये मिक्सचर पुट करने के बाद उसके ऊपर यूलुएंट पुट करेंगे, एक्स्ट्रा सब्सटेंस पुट करेंगे जिसे मूविंग फेज का था. अब देखिए जैसे हमें ये सब उसके ऊपर हमने पुट कर दिया है, वो यहाँ पे नीचे आएंगे. और होता क्या है कि ए बी सी डी ई अलग अलग सब्सटेंसेस है, सबका एड्सॉर्प्शन रेट डिफरेंट है. तो कुछ सब्सटेंस, मानो ए सब्सटेंस यहाँ पे एड्सॉर्ब होगा, ए उसका एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है, ए यहाँ पे एड्सॉर्ब, शायद सी यहाँ पे आएगा, फिर हो सकता है डी यहाँ पे आएगा, फिर हो सकता है ई यहाँ पे आएगा. ओके, जरूर नहीं सीक्वेंस में आए, जिस सब्सटेंस का एड्सॉर्प्शन ज्यादा है वो है. तो अभी हम जब बात करते हैं कि ए सी डी ई है ना, फिर हो सकता है कि यहाँ पे बी आएगा, लाइक दिस वन यहाँ पे. तो जब बी यहाँ पे आ चुका है, ए यहाँ पे है, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि ए हैज मोर एड्सॉर्प्शन पावर देन द बी. बी इज लीड्स एड्सॉर्प्शन. हमने देखा हुआ है एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड नाम के चैप्टर देखा हमने, जहाँ पे देखा हमने कि कलेक्शन और डिपोजिशन और एक्टिवेशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर इज कॉल्ड एज, यू कैन से, adsorption. So A has more adsorption than the B. C is less than A. B is that. E is less than that. So this is the sequence what we can see here. So because this is based on the difference in adsorption, adsorption के difference के ऊपर ये based होता है. So in that sense, different substance is absorbed at different places because of differential adsorption rate. बहुत key point है differential adsorption जो मैंने यहाँ पे लिखा है. So they are adsorbed here. Now we put a eluent. Eluent मतलब another एक liquid होगा, suitable solvent होगा जो हम put करेंगे, जैसे eluent कहा जाता है chromatography technique के language में. This is another organic solvent which is added, which is before here. So another eluent इसके ऊपर put किया जाए. जैसे हम लोग eluent put करेंगे, सारे substances को नीचे लेके आएगा और यहाँ पे हम लोग अलग-अलग कंटेनर यूज करेंगे, अलग-अलग कंटेनर यूज करेंगे. जैसे हमने इसके ऊपर eluent put किया, ये सारे सब्सटेंसेस उसी तरीके से नीचे आते हैं. ए नीचे आएगा तो सी नीचे जाएगा, डी नीचे जाएगा, ई बी नीचे जाएगा, लाइक दिस वन. और इसके अंदर एक सूटेबल सब्सटेंस यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू गिव दिस कलर्स. तो होता है कि कलर बैंड भी आपको दिखाई देता है. सो मान लो बी का एक येलो कलर का बैंड आता है, ये जैसे हम इलेंट पुट करते जाएंगे ये बी नीचे आता जाएगा. तो इलेंट इज कॉल्ड एज मूविंग फेज, गोइंग टू मूव कंटिन्यूअसली, एंड these beds of charcoal are going to be steady. This is called as stationary phase. So in chromatographic technique, there is a stationary phase, there is a moving phase. So as we put the eluent, that moves down, that comes down. And what happens here? When these layers comes down, so when the B comes down, B is collected in one container. Once all B is removed, then this container is removed and another second container is put in which E is collected. When all E is removed, then third, then fourth,
Then fifth, in this way, all these A, C, D, E are collected in separate containers. This is the way how this adsorption chromatography works, or we can use this adsorption chromatography. Hope so everyone getting it. What is we are talking about this adsorption chromatography? Adsorption chromatography is based on differencing adsorption. Every substance has a different rate of adsorption. What is adsorption? We have seen in earlier chapter. Collection of one substance on the surface of another substance is called as adsorption, or accumulation of one substance on the surface of another substance is called as adsorption. ये अगर चारकोल के बेड है तो चारकोल के सरफेस के ऊपर ये सब्सटेंस ये एडसॉर्ब होते हैं, एब्सॉर्ब्स नहीं. बिस्किट के अंदर चाय एब्सॉर्ब होता है, ये सरफेस के ऊपर डस्ट एडसॉर्ब होती है. सो एडसॉर्ब होना और एब्सॉर्ब होने में बहुत फर्क है. सो दैट इज व्हाट वी कैन से. तो होता क्या है, ये जो चारकोल के बेड है, अगर सॉल्यूशन हो सकता है, रेजिन्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल रेजिन्स हो सकते हैं, सिलिका जेल हो सकता है. दीस आर कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज बिकॉज़ दे आर नॉट गोइंग टू मूव, दे आर गोइंग टू बी स्टेडी and they will show response to the adsorption. And the substance or mixture which is poured over here, that mixture will adsorb. Different substance will adsorb at different place. The substance which is having more rate of adsorption will adsorb over here at the top. Then the least adsorption, then least and less. But the least substance which is having the least adsorption will be at the bottom of this burette, no doubt. Clear with this? And then we use a eluent. Eluent is a suitable solvent which is poured over here, and that will acting as a moving phase because that will bring down all these substances for you. So when the eluent is added, then these layers will come down and will collect one by one all the layers in order to give a suitable colors to identify them. So suitable substances are added, and all these are collected into separate receivers or separate containers. So B is collected in another container, E is collected in another container, and so on, which we can separate out all the substances, all the mixture. This is called, you can say, chromatographic technique, and this is nothing but the adsorption chromatography. As I stated, there are many types of chromatography. So number one chromatography is nothing but the adsorption chromatography. अभी आते हैं हमारे घर के प्यूरिफायर के अंदर. ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों के घर के अंदर वाटर प्यूरिफायर होगा. चाहे आप लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला वाटर प्यूरिफायर यूज करे या कोई भी यूज करे, उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल या फिर आर्टिफिशियल रेजिन्स ये यूज किया जाता है और जिसके आधार पर वाटर प्यूरिफाई किया जाता है. ऑलमोस्ट टेक्निक यही होता है इसके अंदर. उसके अंदर स्टेशनरी फेज होता है जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज एडसॉर्ब होते हैं, वाटर एडसॉर्ब नहीं होता, इम्प्यूरिटीज एडसॉर्ब होते हैं एंड प्योर वाटर इज रिमूव्ड एट द बॉटम एंड ऑल द इम्प्यूरिटीज आर एडसॉर्ब्ड ऑन दिस आर्टिफिशियल रेजिन्स. तो हो सकता है कि आपके घर के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद वो फिल्टर बदलना पड़ता है. दैट फिल्टर इज नथिंग बट having this stationary phase जिसके अंदर impurities adsorb होते हैं. So this is the way to ये जो chromatographic technique होता है हमारे घर के अंदर हर water purifier के अंदर ये यूज किया ही जाता है. अलग अलग तरीके से होता है. Substance जो stationary phase होता है वो अलग अलग यूज करेगा. अलग अलग कंपनी अपना अपना इन्वेंशन करके अलग अलग रेजिन्स, आर्टिफिशियल रेजिन्स या अलग अलग चीजें यूज करेगी उसके अंदर. बट केमिकली और साइंटिफिकली उसका प्रिंसिपल वही होता है. That is based on the differential adsorption. So that is what we have seen. That is, you can say, adsorption chromatography. And the remaining is, you can say, paper chromatography and column chromatography. That will be discussed in tomorrow's lecture. Okay, then, thank you very much. Bye bye. See you tomorrow.